Okay, so we are live, right? Hello and good evening. मेरे साथ कौन कौन है मुझे ज़रा बताइएगा. Welcome to yet another session of spoken English, communication, soft skills, personality development, and all that is related to communication. And yes, like every other day, with you, I am your communication facilitator, Parmita Dhar from Kolkata. So before I start today, again, let me tell you, today also I have two parts of this show, of this session rather, where in one part, yes, Devilal, thank you. I was waiting for you. Right. In one part, Paramveer, namaste, kaise ho aap? Yes, Devilal. Okay, Anand. Hello, Anand. No, Kanchan Soni. Hello, Kanchan. Hello. So, as I was telling you, again today, like every other day, we will be, hi Kavita, we will be doing two things in a single session. The first one is, of course, a little bit of grammar, brushing up our school days. Little bit, मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ आप लोगों को. इसका एक ही रीज़न है कि ज़्यादा बोलने से, ग्रामर अगर मैं ज़्यादा पढ़ाते जाऊँ ना, इस इन वन वे कम्युनिकेशन द काइंड ऑफ दैट वी हैव हियर, आप लोग बहुत बोर हो जाएंगे. ओके, आई एम फाइन मैम. ग्रेट 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 टू सी दैट, परमवीर. Always keep well, always keep happy. That's most important. Priya Chaudhary, good evening. Priya, good evening. Aman, hello Aman, good evening. Kavita, of course. Hi Kavita. Okay. So this gives me a kind of, push to start my communication session with you. You people, when you come and say hi to me, I understand that there is something which is there. I mean, there are people who are there waiting for the session to take place, and I come to know that you all are there with me. As I always tell you, communication is a two-way process. दो तरह से communication होता है. एक तरफ से नहीं हो सकता है, वो सिर्फ इंटरपर्सनल में होती है, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. लेकिन कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस हम किसी और के साथ करते हैं. तो आप लोग हो तो मेरा कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो रहा है इतने दिनों से इन दिस फेसबुक लाइव पेज ऑफ एसकेडी यूनिवर्सिटी. और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ सर्टिफिकेट once you finish this course, right? Once you finish this entire course, you will be given a participation certificate from SKD University Hanumangarh. So and one more thing, you keep on asking me your questions, right? 2 days I'm getting, for the last 2 days I'm getting some feedback from some students after the class is over on my messenger. That's wonderful. That helps me. That's helping me a lot. I can understand like whatever I'm trying to give you, to what extent कितना आप लोग उसे ले पा रहे हैं, और आप लोगों को मेरे से व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या पढ़ना चाहते हो, आप क्या जानना चाहते हो. तो आज शुरू करते हैं. दो चीजें. फर्स्ट ऑफ ऑल इज वर्ब, क्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं. आप सबको मालूम है वी कैन नॉट फ्रेम अ सेंटेंस without verb. Now that I'm saying we cannot frame a sentence, इस sentence में frame जो word है वो है verb, क्योंकि इस word से हमें पता चल रहा है कि हम लोगों को sentence बनाना है. Framing a sentence means बनाना. So verb, जैसे हम लोगों को बचपन में सिखाया गया था, it is an action word. जैसे मैं बोल रही हूँ बचपन में सिखाया गया था, so सिखाया is an action जो हमारे टीचर ने किया था हमारे लिए, और हम लोगों ने सीखा था. तो सीखा is always is also an action, right? So verbs are action words in a sentence that describe what the subject is doing. You all know that a sentence has a subject and a predicate. The subject is the person or the thing from where the sentence is being initiated, or about whom the sentence is being framed. So like I am taking a class now.
right? So I am live on Facebook now. So what is the action word? Taking, live. These are all the verbs, right? The doing words, and the subject is of course I. And a sentence without a verb is very hard to find. In fact, I do not know whether we will be able to find anything like that. Verb are the action words in a sentence that describe what the subject is doing. My dog is playing outside. So what is my dog doing? It is playing. So playing is the action that it is doing, the dog is doing. Along with nouns, verbs are the main part of a sentence or phrase, telling story about what is taking place. In fact, without a verb, full thoughts can't be expressed or conveyed properly. For example, Maria sings very well, right? Virat Kohli is an excellent batsman, right? Uh, or he drives very rash. Okay. So all these, she eats chocolate. She likes to eat chocolate the entire day. All this tells us about something which is being done, right? So Mark eats his dinner quickly. How does Mark eat its dinner? Mark eats his dinner quickly, बहुत जल्दी जल्दी. And what is quickly? Quickly is adverb, right? I will take a session on adverb as well because it is a very very important part. Uh, just one thing, I keep on telling it that in our childhood हमारे बचपन में ये सिखाया गया था कि कोई भी ly शब्द हो तो वही एडवर्ब है. बात दरअसल वो नहीं है. एडवर्ब ly से अलग भी बहुत सारा कुछ एडवर्ब हो सकते हैं. हम लोग आएंगे उस पे. यू राइट वेरी नीटली इन योर notebook, right? So writing is a work. How you write neatly. Okay. So when an action is being thought of physically, that is a verb. And when it is thought of mentally, that is also a verb. Like say for example, she is thinking about her exam very very seriously. She is thinking. So thinking is also an activity, but we cannot see that. So it's not a physical activity, it's a mental activity, but that also is a verb. That also is a verb. So two types of verb. One is physical verb, which means action verbs. They describe a very specific physical action, a very specific physical action. जो एक फिजिकल एक्शन को समझाते हैं उसे बोलते हैं फिजिकल वर्ब. उसे बोलते हैं फिजिकल वर्ब. जैसे कि द डॉग ब्रीथ्स क्विकली आफ्टर द रन. ओके. सो एक फिजिकल एक्शन समझाया जा रहा है यहाँ पे, तो दैट इज अ फिजिकल वर्ब. Another example is, let's learn till that corner of the street, or I can hear the train coming. Okay, and then there are mental verbs. What are mental verbs? Mental verbs are the meanings that are related to concepts such as say discovering, understanding, thinking, planning, which refers to our cognitive sense. Cognitive sense means हमारा ध्यान, सोचना, समझना, उस पे जो उससे जो एक्शन हम करते हैं, that is a mental verb, right? So for example, if somebody tells me, yes ma'am, I know what you want to say when it comes to verb. So this knowing is an action, but a mental action. Or the same thing, somebody says, ma'am, I will write it down. Whatever you are saying, I know it all and I will write it down for you. That is also an action.
But writing is a physical action. Knowing is a mental action. But both, in both the cases, it is a verb. Am I clear to all of you? ओके ओके। तो जल्दी जल्दी मुझे एक फीडबैक दे दो मैसेज में आके, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को ये वर्ब का मेंटल और फिजिकल जो डिफ्रेंसिएशन मैं करना चाह रही हूँ, मैं समझाना चाह रही हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। हरिया। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। So, uh, mm, these are the two very important things in verb. Yes, ma'am. Thank you, Kiran. ये मुझे बहुत हेल्प करते हैं आप लोगों का। ओके संजय, थैंक्स संजय। आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहना, इसका भी मुझे पता चलता है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आपको समझ में कहाँ तक आ रही है, right? So we need to understand that, because again, going back to my repeated dialogue, communication is a two-way process. So some examples of verbs. Let me give you: run, dance, slide मतलब slide है सही ना, हम लोग slide में चलते थे बचपन में, पार्क में जाके। jump, think, do, go, stand, smile, listen. अच्छा, आज ना हम लोग listening पे बहुत सारा बातें करेंगे. We will try to understand listening, and that is also an action, a verb, right? And there are again two other types of verbs which are known as transitive verb and intransitive verb. Definition आपको नहीं सीखना है, my dear boys and girls, my dear students, friends. You don't need to learn the definition, because मैं जो इतना बात कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, अभी मैं transition verb यूज करूंगी, अभी मैं intransitive verb यूज करूंगी. No, I don't say so. I mean, no one does. Why me? No one does so, right? So in that case, you just have to understand, just for the sake of understanding, because once you understand, एक बार समझ में आ जाए ना, तो वो जहन में रह जाती है. You will never forget it. So you can then afterwards, you can teach maybe a friend of yours, some younger brother or sister of yours, whosoever. You can give them a thorough idea about what is verb, how to use it, where to use it, what is the importance of verb in a sentence, how it changes the meaning of the sentence, so on and so forth. That is why the entire concept I try to make it clear. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दूं, ताकि एक बार जो समझ गए ना, वो समझ गए. जैसे ये सारा कुछ मैंने पढ़ा था स्कूल में, लेकिन since my profession is this, I keep on doing it, so it's fresh in my mind. लेकिन आप लोग कोई एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, मैंने देखा देवीलाल इज अ लॉ स्टूडेंट, कोई मैनेजमेंट पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का उतना you don't practice it, isn't it? So that's why what happens, at times you forget, it goes out of your mind. So I'm just trying to brush up so that you can understand it, you can relate to it, और आप आगे जाके इसका सही यूज कर सके. So the transitive verb is, say for example, if I say Ram ate the cookies, right? Or whosoever ate the cookies, the transitive verb is ate, A-T-E, ate, eat, ate. ठीक है? So why? Because Ram is the subject here, and he did something that is eating the cookies, right? Which are the direct objects. And because it is already being eaten, खाना हो गया, राम ने खा लिया, so it is, the sentence is framed as Ram ate the cookies. Okay, he kicked John, John punches him, they sold all the tickets. All these are examples of transitive verbs. That is in where there is a I'll just give you one example. Say for example, Mary baked her mother a cake. Mary baked her mother a cake. So in this sentence, a cake is the direct object, while her mother is the indirect object. So an object has to be there in transitive form, right? That is very, very important.
Very, very important, right? Then comes something which is intransitive verb, that is traveled. Matlab, the subject, for example, we travel to London, so the subject is we. हम लोग क्या किए, हम लोग लंदन में travel किए. So the verb यहाँ पे कौन सा है, we travel to London, which is the verb, traveled is the verb, and the subject is we, right? The subject is we, because we are doing the traveling. कौन travel कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, right? So that is why the subject is we and the verb is traveled, right? uh, okay, then some other examples of transitive verb. Intransitive verb is like, he arrived with moments to spare. Okay, Catherine sat away from others, right? So these are examples of transitive verb. There is another type of verb which are intransitive verb. There's another type of verb which is called auxiliary verb. Auxiliary verbs are known as helping verbs, right? इसको helping verb भी बोला जाता है, जैसे would, should, do, can, did, could, all this like I would go home after the football match. So it is helping the verb. That is why it is known as auxiliary or helping verb, right? For example, I may dance with you later. So dance is the main verb. I may dance with you. It is helping to make the sentence or to make the sense को पूरा करने के लिए इसको यूज किया जाता है, right? So this is it. There are also certain other types which I am not very much bringing into this session, because those are matter of practice. You just keep one thing in mind. You just think one thing in mind, that verbs are the doing words. A sentence cannot be complete without a proper verb. And keep in mind one thing, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, कि verb का tense बहुत important है. तो अगर वो पास्ट टेंस में होगा, ईट का एट हो जाएगा, प्ले का प्लेड हो जाएगा, कम का केम हो जाएगा, गो का वेंट हो जाएगा. यू ऑल नो टेंस आई विल बी डूइंग. यू नो दिस ग्रामर पोर्शन, ये एक के साथ और एक इतना जुड़ा हुआ है कि एक मैं समझाने जाती हूँ तो दूसरा आ जाता है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग इसको धीरे धीरे डे टू डे एक्टिविटीज में इसको मैं इंक्लूड करती हूँ, ताकि आप पे प्रेशर कम रहे और आप समझ पाए कि verb, the first day we did sentence, how to construct a sentence and the different types, various types of sentences. We did that as well. So slowly in the process we will be doing it. Okay, am I clear to all of you? चलिए आप लोग बताइए कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बताऊंगी आप लोगों को, और एग्जाम्पल्स के साथ समझिए, बिकॉज इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड विदाउट एग्जाम्पल्स, आई मीन थ्योरी पढ़ के इसका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब, यू आर गोइंग टू यूज इट इन योर डे टू डे कम्युनिकेशन. यस कविता, थैंक यू सो मच माय डियर. इंडियन विश्नोई, ये कौन है, आपका नाम क्या है बेटा? वरुण. ओके ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू. सो जी मैम, राइट, थैंक यू. आनंद, थैंक यू. नहीं, कंचन, सॉरी, आप उस वो नाम को थोड़ा चेंज कर लीजिए ताकि मैं सही नाम से आपको रेफर कर सकूं, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन एवरी, just now as I said, आप नाम को थोड़ा चेंज कर लीजिए. So this change is a verb, है ना? Right? So all this in our day-to-day life, in our day-to-day activities, we have to understand, right? Okay. Now one more thing. I always tell you that you should learn two new words, new to you, not to me, not to anyone else. तो आज दो शब्द क्या आप लोगों ने सीखा है?
Did you learn any new word? Not only aaj, over the time that I'm being here associated with you for the last from the last week. ओके ओके तो मुझे बताइएगा डू कीप posting me about what you are learning, what new words are you people learning, so that I can also come to know about a few new words. ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे हमारे कम्युनिकेशन की तरफ, राइट? और कम्युनिकेशन में आप हमें बताइएगा जो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ. ओके, आनंद इज सेइंग यस मैम, यूजफुल इंफॉर्मेशन. ओके 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 डॉक्टर अहमद पुनिया, थैंक यू सो मच. आज हम लोग जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, आई हैव मेंशन दिस टू यू बट आई हैव नॉट थॉरली डिस्कस्ड. मैंने इसको बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस नहीं किया बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, एंड विदाउट दिस नो कम्युनिकेशन कैन बिकम अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन. और यहाँ पे जब मैं कम्युनिकेशन बोल रही हूँ, मैं ओरल कम्युनिकेशन के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन मीन्स बात करना, जो हम लोग ओरली करते हैं, जैसे मैं अभी आपके साथ कर रही हूँ, राइट? वो जब मतलब जब ओरल कम्युनिकेशन का बात आता है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग. I am sharing this with you now. हाँ, दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से. एक बार मुझे एक मैसेज में आप लोग बता दीजिए whether my PPT is showing or not. इस बार PPT शोइंग, क्या मेरा PPT दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, दिख रहा है शायद. कोई एक मुझे थोड़ा सा मैसेज में बताइएगा. वन क्विक चैट मैसेज. One quick chat message, please. Because I am not being able to understand whether it is showing or not. Let me find it out in my Facebook page. Okay, great. That's what I was. Thank you, Anand. Now, active listening. ये देखिए, this is an example of active listening. I tried to tell you something, right? आपने सुना और immediately respond किया, right? In virtual medium, what happens, थोड़ा सा डिलेड ट्रांसमिशन होता है. मैं जो बोलती हूँ वो कुछ सेकंड्स बाद आप तक पहुंचती है, तो आपका रिस्पॉन्स भी मेरे पास कुछ सेकंड्स बाद आता है. आई डू नॉट नो द IT टेक्निकल पीपल, दोज हु आर देयर टू हेल्प मी एवरी डे, दे कैन टेल मी व्हाट इज दिस. बट मैंने ये देखा है ना कि सिर्फ SKT यूनिवर्सिटी की क्लास में, बल्कि मैं जहाँ भी ऐसे सेशंस लेती हूँ, दिस इज द थिंग. बट if you listen to me maybe 30 seconds late, you can respond, and that is what is very very important. Just a second, my dear boys and girls. That is what is very very important. Okay, right? So in that case, we will start with active listening, because listening is a magnetic and a strange thing, a creative force. The friends who listen to us are the ones we move toward. When we are listened to, it creates us, makes us unfold and expand. So this is a very interesting quote by an American psychiatrist, Carl A. Menninger. He says, listening is a magnetic and strange thing, a creative force. The friends who listen to us are the ones we move toward. When we are listened to, it creates us, makes us unfold and expand. So it's a very very important quote, and ये तो आपको पता ही है ना, जो आप
का कुछ भी बात, अच्छा हो बुरा हो, इम्पोर्टेंट हो नॉट सो इम्पोर्टेंट हो, अच्छे से सुने, ध्यान से सुने, आप उसी के पास बार बार जाना चाहोगे. वी ऑल लाइक इट. वी वॉन्ट एवरी वन टू we want everyone to acknowledge to what we are saying, to recognize to what we are saying, right? And these are very important. These are very important. Okay, so why listening is important in communication? Listening का process क्या है? Listening का process है receiving, constructing the meaning from, and responding to spoken or non-verbal messages, to hear something with thoughtful attention. Listening एक physical process है? No. Listening is a physical and a cognitive process. हम लोग कुछ आवाज होता हो तो वो हमारे कान तक पहुंचती है. It comes to our ears. That is hearing. Till that process, it is hearing, right? और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसको हम लोग रिसीव करते हैं. We receive that. Then we construct a meaning. उस पे एक मीनिंग बनाते हैं. We actually decode. कोई भी साउंड, कोई भी आवाज हमारे पास पहुंचे तो उसको हम अपने हिसाब से तोड़ के डिकोड करते हैं. उससे एक नया मीनिंग अपने आप में तैयार करते हैं, राइट? एंड देन वी रिस्पॉन्ड टू स्पोकन और नॉन वर्बल मैसेजेस. और उसके बाद हम लोग या तो बात करके या फिर नॉन वर्बली भी उस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं ये करूं, आपका बात सुन के, you tell me that okay man, your PPT is being showing, right? It's being shown on the live, Facebook live. So I do this. I have listened to you and you have given me a cue and I am giving back you a cue. So I'm doing a thumbs up. Right? So this thumbs up is a non-verbal cue. लेकिन ये क्यू और ये जो सिग्नलिंग मैं कर रही हूँ, किससे कर रही हूँ? From where am I doing it? From whatever you have told me and I'm responding to it. Listening, communication, as I always say, is a two-way process and it depends on two things. Oral communication. I'll be doing oral communication with you as well. It depends on two things. One is speaking. मैं बात कर रही हूँ. And the other one is listening. If I do not listen to you, I will not be able to understand. वो feedback जो मैंने आपको बताया था ना कि communication process requires a lot of feedback. So वो feedback कभी नहीं आएगा, right? So listening is a very very important aspect. और मैंने आपको क्या कहा था कि जितना हम सुनेंगे यहाँ से वहाँ से, उतना लैंग्वेज पे हम लोग exposed होंगे. We will be more and more exposed to that language, right? So ये exposure बहुत ज़रूरी है. जितना एक्सपोजर होगा उतना जान पहचान बढ़ेगा. जितना जान पहचान बढ़ेगा उतना दोस्ती होगा. जितना दोस्ती होगा इंग्लिश उतना आसान होते जाएगा. So it's the same thing, it's just like that, right? So you got to listen to carefully to all the English speaking activities that is being held around you, whether it is a television news, whether it's an English movie, whether it's a series on any of the OTT platforms, or you listen to teachers like me or someone else in your college, in your university, in your school, and thus you become more accustomed to the language. You become more accustomed to the language. Language के साथ आप बहुत ज़्यादा जान पहचान आपकी बढ़ जाएगी, right? Okay. Now we come to the next one, and what it says that what is the difference between listening versus hearing? Listening और hearing में क्या अंतर है? एक ही तो बात है, सुनना ही तो है. नहीं,
एक सुनना है और एक ध्यान से सुन के उसको समझना है. One you have to listen to, and the other you have to listen to carefully and understand empathetically. कैसे अंडरस्टैंड करना है? सहानुभूति के साथ अंडरस्टैंड करना है. जो बात बोल रहे हैं उनके हिसाब से अंडरस्टैंड करना है. राइट? सो हियरिंग इम्प्लाइज परसीविंग साउंड्स. कोई भी साउंड बाहर अगर अभी बहुत जोर से लाइटनिंग हो, that is hearing. I hear to that and I understand that it is a lightning, it's a thunderstorm. It's a thunderstorm. The sound of a thunderstorm, right? But if it is something else, someone is calling me from the road, and I come to realize that someone is taking my name and calling me. So what I try to do, I not only hear a physical sound, but I try to understand the information. मुझे लगता है कि क्या हुआ? Is there any kind of a problem? Is there any kind of a problem? No. So understanding information with involvement from mind and body. Hearing is only the body, our ears. Hearing is only the body, and what is that body? The body is our ears. Okay, and the other thing is when it comes to listening, what is it? It is what? It is a process where the mind and the body is involved. Right? Hearing is a passive process. Listening is an active process. जहाँ पे आपका energy, आपका bodily involvement, आपका mindfulness, सारा कुछ involve हो. That is an active process. Right? Which is not in case of a hearing. जो sound हमारे कानों तक पहुँचती है, that's a passive process. पहुँचती है, फिर हम उसको भूल जाते हैं. Right? Hearing involves effortless activity. इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं होता है. I don't have to spare any energy for that. कहीं पे कुछ आवाज हो रहा है, I do not know the grammar part of it. I'm sorry for that. And I am being listening to it. मतलब मुझे वो सुनाई दे रहा. But when it comes to listening, it requires a conscious effort. सुनने की कोशिश कर रहे ऐसे करके, right? We do this. We lean forward. We take care of all the kind of what would I say? All the kind of measures so that we can listen to the thing carefully. It requires conscious efforts. It requires a lot of concentration and of course interest. अगर interest ना हो किसी भी विषय पे, चाहे उस पे लोग कितना भी बातें करें, we are never actively involved in that process. Okay, so that is a very very important thing we need to keep in mind while we are listening. ठीक है? तो आपको समझ में आया? तो मतलब इतना कुछ बोलने की जरूरत क्या है? The reason I am telling you so many things is because what? If you listen carefully, you will be able to understand. You will be able to learn. You will be able to take that process forward, take the leadership, and move ahead with that process. Am I clear to all of you, my dear friends? I think I am. Okay. Let me see if there is any message. Okay, right. Okay. Now, why do we need active listening? ये जो active listening का बात हम लोग कर रहे हैं,
ये हमें क्यों चाहिए? वाई डू वी नीड दैट? वाई डू वी नीड दैट? राइट? ये एक्टिव लिसनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प अस? How is it going to help us? Listening is one of the most important skills you can have. How well you listen has a major impact on your job effectiveness and on the quality of your relationship with others. It's not only job effectiveness, though I have written it. अगर आप क्लास में जाके अच्छे से सुनेंगे, whatever your teacher is teaching you, it will have an impact in your mind. और जब एग्जाम्स के पहले बुक खोल के बैठेंगे to learn, to revise, to prepare for exam, that active listening is going to help you. Because when we do something with full concentration, जब कोई भी चीज हम लोग बहुत कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, वो हमारे दिमाग में रह जाता है। ठीक है? और इससे क्या होता है? इससे लोगों को लगता है कि दिस पर्सन इज अ सीरियस पर्सन. वॉट एवर ही और शी इज डूइंग इज नॉट डूइंग टाइम पास करने के लिए ये क्लास में नहीं आता है, ये सुनने के लिए आता है, ठीक से सुनता है, ध्यान लगा के सुनता है, और उसका रिजल्ट्स हम लोग और उसका इम्पैक्ट हम लोग एग्जामिनेशन, कॉपी, वाइवा, प्रेजेंटेशन, इन सब चीजों में देख पाते हैं. राइट? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड. इट हेल्प्स टू डेवलप रिलेशनशिप. मैं तभी आपकी बात सुनूंगी, आप भी तभी मेरा बात सुनेंगे, जब मैं आपको इंपॉर्टेंस दूंगी. और जब एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तभी रिलेशनशिप बनता है. कोई भी रिलेशनशिप. इफ योर फादर डजंट लिसन टू यू एनी टाइम, whatever you want to tell him, a day will come when you will avoid telling anything to him. If your mother listens to you every time you go and say whatever to her, you will feel more comfortable and your relationship will become even more positive, even more better. Right? If your friend doesn't listen to you, you will care not for him or her anymore. But if he or she listens to you, you will try to be there whenever they need you. Right? यही है. This is a simple equation. It is a simple equation. आप मेरी सुनो, मैं आपकी सुनूंगी. Right? We listen to obtain information. अगर हम लोग नहीं सुनेंगे तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. हम लोग न्यूज क्यों सुनते हैं? ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले. चारों ओर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसका इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है. और वो हम लोगों को कैसे मिलेगा? हर टाइम पढ़ने का टाइम नहीं होता है. वी डोंट हैव द टाइम टू रीड फैट बुक्स, राइट? 20-page newspaper, not always. So we listen to the news, radio news, we listen to the television news, we listen to what other people are discussing about a particular issue, right? और सुनते सुनते हम लोगों को information मिल जाता है. We come to know about the information. Okay? And that is why listening is so important. Right? We listen to understand. If I don't listen, I will never understand. Because listening किससे होता है? With someone who is speaking, right? Who is singing, who is acting. वही तो डायलॉग बोलेगा, तभी तो हम लोग सुन पाएंगे. You are reading a news. With this oral communication, there is also a lot of non-verbal communication. है ना? कल परसों 2 दिन हम लोगों ने non-verbal communication के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया, और वहां पे हम लोगों ने देखा कि ये वॉइस मॉड्यूलेशन ये भी इम्पैक्ट करता है समझने के लिए. और वो जब हम लोग सुनेंगे तभी उसको समझ पाएंगे, तभी उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे. राइट? सो लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट इन दैट केस ऑल्सो. ठीक है ना? समझने के लिए. वी लिसन फॉर एंजॉयमेंट.
एक गाना सुन के, अरिजीत सिंह का गाना सुन के वी एंजॉय, दैट्स एन एंटरटेनमेंट ऑल्सो, है ना। स्टैंड अप कॉमेडियंस का कॉमेडी सुन के सुनते हैं वो हम, दैट इज लिसनिंग। हम लोग हंसते हैं, वी गेट रिफ्रेश्ड, राइट। सो लिसनिंग इज ऑल्सो फॉर एंजॉयमेंट, लिसनिंग इज ऑल्सो फॉर एंजॉयमेंट। इट्स नॉट कि हर टाइम समझना है, फीडबैक देना है, एग्जाम में परफॉर्म करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, नहीं। We also need entertainments in our life, and listening does it for us, right? Listening does it for us. Okay. Okay. So that is another important thing. We listen to learn also. जैसे मैंने आपको कहा कि आप इंग्लिश सुनिए, तभी आप सीख सकते हैं, तभी आप सीख सकते हैं, राइट। सो सुन सुन के हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे स्कूल में बचपन में हमें राइम सिखाया जाता था, हमें तो पढ़ना नहीं आता था, हमारे पेरेंट्स, मदर्स स्पेशली हमें राइम सिखाते थे। जैक एंड जिल वेंट अप टू द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन एंड broke his crown and Jill came tumbling after। क्या आपको पता है कौन जैक है और वो कैसे चल रहा है, कैसे बाल्टी में पानी भर के ला रहा है? नहीं, लेकिन सुन सुन के ओरेटरी सुन सुन के हम लोग सीख जाते हैं। सो लिसनिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। सो दिस इज द लिसनिंग प्रोसेस। Stage 1 is what? Stage 1 is listening. Stage 2 is understanding. Stage 3 is remembering, right? Stage 4 is evaluating. And stage 5 is feedback. तो हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग कान में आवाज आती है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसको रिमेंबर करते हैं, उसको याद रखते हैं, right? It's a very spontaneous process and a very fast process. जैसे मैं ऐसे ब्रेक करके आप लोगों को बता रही हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं है। Very fast it happens within fraction of seconds, लेकिन है। So listening, उसके बाद understanding, उसके बाद remembering, उसके बाद evaluate करते हैं कि इस बात का क्या जवाब दूं मैं। आप जाते हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने, सब्जी वाला बोलता है आलू का भाव 20 रुपया है। आपको लगता है अच्छा आलू 20 रुपया, चलो इसको बोलते हैं कि 18 में लगा दो, राइट? गिव इट टू मी एट 18 रुपीज। सो दैट इवेल्युएशन कि 18 बोले या 15 बोले, दैट्स एन इमीडिएट रिएक्शन। We don't have to wait for that. And our brains are the super computers, right? And that is why listening, understanding, remembering, evaluating, and then we give a feedback. ये जो 4 प्रोसेस हो जाता है ना, फिर हमारे मुंह से या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, हमारे बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, इन सारी चीजों से we give the feedback. नहीं, you know, your friend comes and tells चलो मूवी देखने चलते हैं, so you immediately try to think कि आज कौन सा ट्यूशन है, मम्मी को क्या बोलना है, पापा से कैसे पैसा लेना है, फिर बोलते नहीं यार आज नहीं होगा, आज जाएंगे तो बहुत मार पड़ेगी। So ये जो एंटायर प्रोसेस है, ये शायद 2 मिनट भी ज्यादा टाइम है इसके लिए, 1-1.5 मिनट में ही आप बोल देते हो। फ्रेंड आता है, आपको प्रपोजल देता है, आप सोचते हो, समझते हो, फिर याद करते हो कि नहीं आज जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है, और then you take a decision and then you give a feedback. The feedback is your decision, right? So this listening process seems in 5 stages, and it is in 5 stages, but it is not in 5 stages actually. It's a 50-second activity, I would say, or even less, 30-second activity. Okay. तो 5 तरह के लिस्निंग्स होते हैं, 5 तरह के लिस्निंग्स। 1 डिस्क्रिमिनेटिव लिस्निंग, 2 कॉम्प्रिहेंसिव लिस्निंग, 3 एम्पैथेटिक लिस्निंग, 4 एनालिटिकल लिस्निंग, और 5 एप्रिशिएटिव लिस्निंग। और पांचों के 5 ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। All these 5 listening is very important.
हम लोग ये नहीं बोल सकते कि डिस्क्रिमिनेटिव लिस्टिंग आपको नहीं करना है। सिचुएशन के हिसाब से आपको डिस्क्रिमिनेशन भी करना है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा मुझे सुनना है, याद रखना है, ध्यान देना है, और कौन सा जाने देना है। कि मान लो आप एक बहुत ही बड़े गैदरिंग पे गए हो, सारे लोग बात कर रहे हैं वहां पे, आप कितना सुनोगे और क्यों सुनोगे, क्यों सुनोगे? तो वहां पे यू हैव टू डिफरेंशिएट कि ओके दिस व्हाट एवर। अगेन इट्स सच अ फास्ट प्रोसेस, यू नो, आई रियली कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो कैसे होता है। ठीक है। सेकंड इज कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। मतलब कॉम्प्रिहेंड करना मतलब अंडरस्टैंड करना, समझना। तो जब आप क्लास में होंगे, कुछ पढ़ा रहे होंगे, फिजिक्स का कोई थ्योरी, मैथ्स का कोई फॉर्मूला, इफ यू डू नॉट कॉम्प्रिहेंड दैट, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट, द लिसनिंग प्रोसेस रिमेन्स इनकम्प्लीट। लिसनिंग प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपके क्लास में जाने से शुरू करके आपके एग्जाम के रिजल्ट्स तक पूरा प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाता है। तो सिचुएशन के अनुसार आपको कॉम्प्रिहेंसिवली भी लिसन करना होगा। यू ऑल्सो हैव टू लिसन कॉम्प्रिहेंसिवली। ओके। देन द थर्ड वन इज एम्पैथेटिक लिसनिंग, राइट? एंड देयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर। कोई आपसे कुछ शेयर कर रहा है, विदाउट जजिंग, उसको बीच में रोक के ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये सब बोलने से अच्छा है कि आप बहुत ध्यान से, बहुत सही तरीके से उसकी लिसनिंग को सुने। राइट? यू लिसन टू व्हाट, उसकी बातों को सुने, यू लिसन टू व्हाट दैट पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज और हर पर्सपेक्टिव। उसके हिसाब से सोचने का, समझने की कोशिश कीजिए। राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। बिकॉज अगर ये नहीं है तो इससे काम करना बहुत मुश्किल है। राइट? और आप अगर किसी की बात को, किसी की कम्युनिकेशन को, ओरल कम्युनिकेशन को ध्यान से सुनोगे, इट इज नॉट ओनली यू आर बीइंग एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दैट पर्सन, it is also a learning process. So many experiences people share, उसमें भी हम लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं, बहुत रियलाइजेशन होता है हमारा। राइट? एंड दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। You know, there are two types of gain in our life, you know. One is the immediate and one is the a bit delayed. एक गेन है जो इमीडिएटली मिल जाता है। राइट? जैसे कि आपने आपने 200 रुपया दिया, आपको एक पिज्जा मिल गया, इमीडिएट गेन। राइट? और एक गेन क्या है, आपको पता चला नेक्स्ट टाइम जब आप पिज्जा खाने जाओगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे तो दाम थोड़ा ज्यादा है, वो जो पिज्जा मैंने लास्ट टाइम 200 में खाया था, ये लोग ये 320 का ले रहे हैं। राइट? सो इफ यू लिसन, देन ओनली यू कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट दिस, राइट, डिस्क्रिमिनेट दिस। सो लिसनिंग इज नॉट ओनली फॉर इमीडिएट फीडबैक, अभी के अभी फीडबैक देने के लिए नहीं है, समझने के लिए भी है, एक्सपीरियंस के लिए भी है। राइट? एनालिटिकल लिसनिंग, इवैल्यूएटिंग the meaning of the message, evaluating the meaning of the message, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इवैल्यूएट करना है कि आदमी जो बोल रहा है क्यों बोल रहा है, किस हिसाब से बोल रहा है। राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस हिसाब से बोल रहा है, क्यों? बिकॉज इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, पीपल विल मेक a lot of things you will not be able to understand. They might use you. Right? So evaluate करना बहुत जरूरी है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्या सही है क्या गलत है। एग्जाम्स के पहले दिन आके कोई फ्रेंड बोलता है कि चलो थोड़ा सा चाट वाट खा के आते हैं शाम को, आपको तभी इवैल्यूएट करना है
कि ये तो पढ़ाई करता नहीं है, और इसका व्हाट इज हिज इंटेंशन? हिज इंटेंशन इज आई ऑल्सो डू नॉट स्टडी सो दैट माई रिजल्ट्स आर ऑल्सो नॉट गुड. Sorry, but as a teacher I always think from the results perspective and from the classroom perspective. लेकिन ये तो है ही, तो आपको तुरंत एनालिसिस करना है कि नहीं भाई आज नहीं होगा, आज थोड़ा तबीयत खराब है, कल शाम को जाएंगे, एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, आराम से जाएंगे, घूम घाम के आएंगे. एनालिसिस, राइट? अगर आप इस सिचुएशन में अगर आप बहुत एम्पैथेटिक हो जाओ कि हाँ बेचारे को तो थोड़ा सा घूमने जाना है, मैं भी चला जाता हूँ, नहीं तो कौन जाएगा इसके साथ, then you are taking a wrong decision. Then you are taking a wrong decision. Okay. Then comes something called appreciative listening. Appreciative listening. You listen very carefully, categorically, right? You listen very carefully, categorically, properly, with a lot of concentration. Why? Because you know that you will be getting a lot of ideas, you will be getting a lot of insights, a lot of information, right? और ऐसा भी होता है कि किसी किसी का बात करने का तरीका ऐसा है कि we just love to listen to them, just like we love to listen to Kishore Kumar songs, Lata Mangeshkar songs, Arijit Singh songs. Same way we love to listen to someone who speaks very well. There might be so many people around you whose speaking style actually attracts you towards them, and you love to listen to whatever they say. ये कभी कभी होता है, लेकिन most of the time you think from your perspective. Okay? So active listening बोलने से, अभी हम लोग active verb में थे, अभी आ गया active listening. So what do we mean by active listening? It's making a conscious effort to hear not only the words that another person is saying, but more importantly, the complete message being communicated. The complete message being communicated. वो complete message क्या है? वो जो बोल रहा है उसके साथ पैरा लैंग्वेजेस को भी आप जोड़िए. कल मैंने आप लोगों को पैरा लैंग्वेजेस के बारे में बोला था. That means उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन, उसका एक्सेंट, उसका टोन, उसका आई कॉन्टैक्ट, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस, पिच, वॉल्यूम, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये सारा कुछ मिला के एक प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, राइट? तो उसको आप जोड़िए, राइट? Active listening not only means focusing fully on the speaker, but also actively showing verbal and non-verbal signs of listening. ये तो हो गया फर्स्ट जो मैंने आपको कहा, वो क्या था? वो था from the listener's perspective, कि आप अपने स्पीकर पे क्या क्या देखोगे, what all you will see, right? From that perspective. अभी मैं आपको क्या बोल रही हूँ? अभी मैं बोल रही हूँ कि जो बात करता है ना, जो क्लास में पढ़ाते हो, जो एक पब्लिक स्पीकिंग करते हो, जो एक सेशन लेते हो, उनको भी ना क्यूज चाहिए होता है. अगेन गोइंग बैक टू द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेशन इज अ two-way process, one overlapping the other, one overlapping the other, right? और वहां पे जाके अगर आप क्यूज नहीं दोगे, जैसे हर टाइम मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज मुझे बताइए कि मेरा पीपीटी शेयर हो रहा है या नहीं, क्या मैं ऑडिबल हूँ या नहीं. Why? Because if you do not give me the signals, whether it is a verbal or a non-verbal signal, I cannot, I means not me, कोई भी communication process को आगे नहीं बढ़ा पाता है, right? So top 10 reasons why it is important to listen. Well, it is important to listen to receive information. It is a cutscene. It's a cutscene. It's a behavioral thing, right? Right? It solves problem. सुनेंगे तभी पता चलेगा, तभी problem solve होगा. It helps to earn money, right? जब काम करने जाओगे तो सारा कुछ बहुत अच्छे से सुनना होगा, नहीं तो काम में गलती होगी और सैलरी कट हो जाएगा. Prevent waste, saves time, be more efficient and effective, prevent accidents. आप बात सुन के चलोगे ना, ट्रैफिक सिग्नल का जो अनाउंसमेंट है वो सुनोगे ठीक से, तभी यू कैन एक्चुअली डू अवे विथ एक्सीडेंट. नॉट ओनली दैट, कोई एक प्रोसेस अगर आप ठीक से सुनोगे तब
उसको जब आप अप्लाई करोगे, अपने आप करना चाहोगे, तो वो लिस्निंग जो आपने किया था ठीक तरह से, वो आपको हेल्प करेगी और आप कोई गलतियां या कोई mistake nahi karoge. Build rapport. Of course, we have spoken about how listening helps us to build relationship and rapport and enhance relationship. Of course, we have already discussed that. Okay, so what are the six effective techniques to become a good listener? One is pay attention. Second is withhold judgment. Oh my God, this is a very important thing. पहले ही डिसाइड मत कर लेना कि ये ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है. डोंट डिसाइड ऑल दिस थिंग. सुनो, उसके बाद जजिंग करो. पेशेंस, बॉडी लैंग्वेज, रीस्टेटिंग. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो कि क्या है, या फिर बोलो कि अच्छा क्या आप ऐसे बोलना चाह रहे थे, तो मैम आप क्या बोल रहे थे कि लिसनिंग के लिए, लिसनिंग अच्छा होने से रैपो भी हो सकता है, मतलब हम लोग का रिलेशनशिप भी अच्छा होगा. तो आप इसको रीस्टेट कर रहे हो, मैंने जो बोला आप उसको रीस्टेट कर लो. एंड आस्क क्वेश्चंस, एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू, बिकॉज इफ यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चन देन you will not be able to clarify your doubts. अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे आप तो डाउट क्लैरिफाई नहीं होगा. ओके, एंड व्हाट आर द लिसनिंग टिप्स? लुक इंटरेस्टेड, गेट इंटरेस्टेड, इन्वॉल्व योरसेल्फ बाय रिस्पॉन्डिंग. इन्वॉल्वमेंट तभी होता है जब आप उस प्रोसेस को अपना प्रोसेस समझ के रिस्पॉन्ड करोगे, पूछोगे, सवाल करोगे, बात करोगे, कुछ एक अपने तरफ से उस पर ऐड करोगे. स्टे ऑन टारगेट, इधर उधर सोचना मत. Test your understanding, evaluate the message, and then neutralize your feeling. ये नहीं कि कुछ गलत है, कुछ बुरा है. Judgment is not required. पहले सुन लो, टाइम लो, इवेल्युएट करो मैसेज को, उसके बाद अपना जजमेंट देना. पहले जजमेंट देके उसके बाद उसको अगर हम लोग जस्टिफाई करना चाहते हैं ना, जो बहुत सारे लोग करते हैं, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, तो वो बहुत गलत बात है, वो गलत बात है. राइट? Make eye contact, paraphrase instead of offering unsolicited advice. मतलब paraphrase मतलब एक ही बात को दोबारा बोलो अगर necessary हो. Right? Do not interrupt. Disturb मत करो. Watch non-verbal behavior. मैंने आपको कहा क्या क्या आपको देखना है. Voice modulation, body language, gesture, posture, everything. Shut down your internal dialogue. कोई बात कर रहा है सामने और आप अपने फ्रेंड के साथ या फिर चैट पे व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो, that. Show interest by asking questions. Don't abruptly change the subject. कोई बोल रहा है राम के बारे में, आप पहुंच गए महाभारत के युद्ध में, तो वो नहीं है. Be open, neutral and without judgment or stereotypes. सुन लो, एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, धैर्य रखो, be patient, right? या फिर maybe you don't accept certain things, लेकिन give yourself time and give your speaker some time. Right? And there are some fun facts that we listen about 125 to 250 words per minute and think 1000 to 3000 words per minute. 75% of the time we are distracted, preoccupied or forgetful. इतना जो मैंने कुछ कहा, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ कि 75% तक हम लोग distracted ही रहते हैं, इधर उधर हमारा ध्यान रहता है. 20% of the time we remember what we hear. Right? More than 35% of businesses think listening is a top skill for success. It is a very important one. 35% business वाले सोचते हैं कि अच्छा करने के लिए, बिजनेस में, काम में, किसी भी चीज में अच्छा करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए लिसनिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है. और less than 2% of the people have had formal एजुकेशन इन लिसनिंग. हमारे किसी के पास लिसनिंग के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है. हम लोग ये विथ लाइफ एंड विथ एक्सपीरियंस वी लिसन टू इट, वी लर्न अबाउट इट. विथ लाइफ एंड एक्सपीरियंस वी लर्न अबाउट इट. राइट? सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनीथिंग टू शेयर, you can always tell me. You can always tell me. Right? So the tip of the day, do listen carefully. अच्छे से लोगों के बारे में सुनना, अच्छे से लोगों के बारे में सुनिए ताकि आपको पता चले कि वो क्या बोलना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपको पता चले कि
आपसे वो क्या सुनना चाहते हैं. If I listen to you, I will be able to understand what exactly you want to listen from me. So be a very, very patient, active, and a positive listener. Then only you can be a very good communicator. Right? So that is all from today's session. मैं कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कराऊंगी आप लोगों को. इजी, इंटरेस्टिंग, और आपको मजा आएगा वो करके. उसको बोलते हैं होमोनिम्स. तो होमोनिम्स क्या होते हैं, उसका मीनिंग्स क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, और उसको यूज कहाँ पे करते हैं, इसके बारे में कल हम लोग बातें करेंगे. और आज के लिए बस इतना ही. Just to remind you, if you attend all these sessions, a certificate will be provided upon the completion of this session. Do keep posting your queries, because I do see these Facebook lives afterwards also, just to understand like what has been your feedback on this, what has been your questions on this, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना आप और क्या क्या चाहते हैं. So keep on writing, keep on posting your comments. You can post your comments in English and Hindi. Both are okay with us. And that's all. Let me sign off for the time being from this live page of SKT University. I'll see you tomorrow. Till then, take care.